So, good morning, everybody. This is an important thing I'm going to tell you in advance. Although complex reactions and the details of complex chemistry will be discussed, you will be knowing in your class 12 program, but I don't hesitate if I can get some time to tell you something in advance to keep your interest, excitement afloat. I always try to motivate the guys like you, particularly like you. Now, for example, you are preparing a solution of ferrous sulfate. You have taken ferrous sulfate. Say it is anhydrous. It is anhydrous. You have purchased from the market as green vitriol. It was having 7 water. Let us heat it strongly to make it anhydrous. There is no water of crystallization, no 7 water, nothing. It is anhydrous, right? And you dissolve it in, I am writing the dissolution equation. You dissolve it in water. It is soluble. All sulfates are soluble. Exceptions do not have this. Iron ferrous sulfate is not under exception. So it will be very abundantly soluble in water to produce. You write like this. So far your knowledge will write like this. Ac we usually avoid, but it is all hydrated. The ions are not naked, they are all hydrated, right? But in true sense, what happens, this hydration is actually, it takes 6 water to remain in the form of complex. I'll tell you what is that complex. If you dive deep into the solution with some spectacular eyesight, you will find each ferrous ion will be covalently bonded by 6 water molecules. Ferrous ion will make available some vacant orbitals. We'll know vacant d orbitals. You forget about that, how bonding occurs, the mechanism of bonding, all these are not to be discussed now, but at least I can dare say that 6 water molecule, they form dative bonds with the ferrous ion, and it remains as a hexa aqua iron 2, that is called hexa aqua iron 2 ion. We usually do not write, but inside water, most of the transition metal ions remain in the form of complex. That means they are covalent bonds. But if you write like this, supposing I write, so this is a complex which we do not write, but in reality most of the transition metal ions, they remain as complexes. We can write FeSO4 dot 6 water. This dot has several meanings. That dot has several meanings. Water can remain inside the coordination sphere. That means it will be directly bonded like this. When it will be directly bonded, it is called a complex. And whenever you have a solution, you will not have a naked ferrous ion, but it is bonded with 6 water molecules. So a very hefty, a bulky ion will be coming out, and water molecules will not be detached unless there is a chemical reaction. So these are called complexes.
which are different from, supposing you take a double compound, a double salt, which is all of them belong to addition compounds. Someone, I think a girl asked me, is it can it be called a complex, be called an addition compound? Yes, there are so many types of addition compounds. One of them is a double salt, the other one is a complex compound, complex salt, and the third one can be an adduct with a Lewis acid and a Lewis base. So you will be knowing in your journey, slowly and steadily you will be gaining knowledge. So double salt, you know, supposing you are having a alum, say potassium sulfate, aluminum sulfate, that also contains water of crystallization, dot 24 water. This is alum. आमे जो फिटिकरी यूज करू मो फिटिकरी आम पिला बेले माने अर्ली पार्ट जो दाढ़ी काटुथुलु सेते बेले एते लोशन मिलु नथला दाढ़ी काटला परे आमे एडे एडे ढेमा फिटिकरी रखुथुलु सेते पानी रे बुडेकरी गाल रे घसुथुलु. So that was a disinfectant, and also it is a purifying agent. You know, it brings about coagulation of some colloidal particles present in water and makes it pure. So, and you got alum by mixing potassium sulfate, aluminum sulfate in water solution, and you crystallize it. तमे ताकू स्फटिक कल ए दीटा को सॉल्ट को मिसेकरी तमे ताकू स्फटिक कल. जो क्रिस्टलाइजेशन करा जाए ता टेक्निक अछि, ताकू सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन करा जाए, माने हाई टेम्परेचर रे सैचुरेटेड करा जाए, तापर ताकू धीरे करी ठंडा करा जाए, तेणु बाहरिबो सेथरु अलगा प्रकार क्रिस्टल. तार चेहरा अलगा ना, से पोटासियम सल्फेट भलिया देखा जीवो ना एल्युमिनियम सल्फेट देखा जीवो, से 24 टा पानी ता देरे थिबो. सो आकु क्रिस्टल कला परे आकु जदी पुणी पानी रे पकेइबो सब अलगा अलगा आइजिबो, पोटासियम अलगा आइजिबो, सल्फेट ये तो गोटे प्रकार सल्फेट, एल्युमिनियम आयल अलगा आइजिबो. सो कैटायंस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द आनायंस. पानी पळेबो ता जागा को, पानी संगे पानी एकाकार आइजिबो. एटा थिला, एटा हमें सॉलिड आकार रे क्रिस्टल करिथिलु, स्फटिक करिथिलु, स्फटिक भितरे 24 टा पानी कोवैलेंट बॉन्डिंग रे नथिला. से माने खाली वीक इंटरैक्शन ताको हमें परवर्ती काल रे जानिबा, डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए भलिया गोटे वीक इंटरैक्शन रे थिला, नॉट कोवैलेंट बॉन्डिंग. सो ए माने निज निजर कैटायन भारी आसिले. एल्युमिनियम रे तमे धर्म गुण पाइबो, पोटासियम रे धर्म गुण पाइबो, सल्फेट रे धर्म गुण पाइबो. इट हला डबल सॉल्ट. बट सी हाउ द डिफरेंस हमु जो देइथिली 4 KCN संगरे FeCN2 ए दीटा मिसे करी उटे कंपाउंड तयारी कलो. तमे जानि परलो एठी मिसी गले तमरो बहुत चहेती पोटासियम फेरोसियानाइड तयारी हला. जानि परलो एडिशन हे गला कोन एपटर साइड रे एडिशन कंपाउंड आ कोन. सो एटा को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहि परिबो, केते प्रकार ना कहि परिबो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहि परिबो, and addition compound भी कहि परिबो. but it is this a exotic compound which is distinguished from others by its property. now एइथरे थाए कोन हेइ गला माने तार चेहरा बदली गला, तार चेहरा टोटली बदली गला, होलिया बदली गला. एइथरे थाए कोन चारिटा पोटासियम आयन आउ बुढ़ा फेरस साइनाइड आयन. एथुरु हुगुलिबो नै, आउ एथुरु साइनाइड आयन टा पूरा कोवैलेंट बॉन्डिंग रे अछि. 6टा मु जेमति कहितली वाटर फेरस सल्फेट से नाम लिखि दउछु, पानी भितरे सेटा हेक्सा एक्वा सॉल्यूशन रे अछि. एमती साइनाइड आयन गुडा को डेटिव बॉन्ड करथिबो, केमिति करथिबो ताकू मारो गोली. वर्तमान एमती पूरा एते स्ट्रांगली बॉन्डिंग हे कि थिबो जे ताकू हुगुलेई पारिबोनी. तो फेरस आयन रो प्रॉपर्टी आउ बाबा मिलिबोनी, जे जो थ्रू हमें तयारी करथिले फेरस आयन ता प्रॉपर्टी मिलिबोनी. इंडिपेंडेंटली फेरस आयन थिला बेले मिलुथिला, किंतु वंस एडिशन कंपाउंड हे गला सी गुटे दूसरा जाति रो कॉम्प्लेक्स. से ये वंस कोवैलेंट बॉन्ड हे गले सी आउ हुगुलिबोनी, यार धर्म गुण टोटली अलगा. द प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम the property of फेरस आयन तो बाहरी बनी हो.
जदि डबल सॉल्ट ही थांता ताले फेरस आयन अलगा ही थांता, पोटासियम आयन अलगा ही थांता, साइनाइड आयन अलगा ही थांता। फेरस आयन को आमे माछ पके कि धरि परथांतु, एबे कोनोसी जाल सॉरी जाल पके कि धरि परथांतु, किंतु एथरे किछि जाल पड़िबोनी, फेरस आयन बट धरा दबोनी, सी तो अलगा ता संगे बाइंड हे गला साइनाइड आयन। तुम्हें यू विल बी सरप्राइज टू नो, धीरे धीरे जानिबो, कारण जेमती सबलाइम टोन रे अनन्या राउत कहिले मु टेम्पटेड हे गली, मु कहले किछि कहिबा हौ सर थाउ, जदी सेटा टिके हार्ड हबो आउ ताकू करबानी। देखो आमे जो लेखुचे ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर जो बाजार रु किनुचे, किंबा पानी भितरे पकेले भी ताकू पानी भितरे पकेकरी जो नीला सॉल्यूशन डीप ब्लू सॉल्यूशन हमें करिबा, एटा रो तुतिया रो कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर ब्लू विट्रियल, सेटा एक्चुअली ता भितरे कोन थाए एटा हमते लिखि दो, किंतु भितर एनालिसिस कले देखिबो चारिटा वाटर मॉलिक्यूल सीए कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितरे डीपली बेरिड इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर विथ ए कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, आ गोटे सल्फेट आयन भी अछि। सो बाहर गोटे वाटर अछि जोटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रे नाही, सेटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे वीक इंटरेक्शन रे अछि। तेनु एई जिंसटा आमे सिना हम लिखि दउ, यार अर्थ बहुत हुए तो भितरे नथिबो बाहरे थिबो, हुए तो किछि भितरे थिबो किछि बाहरे थिबो। सेमती धर ग्रीन विट्रियल रे हमें 7 वाटर लिखि दउ, ता भितर 6टा भितरे थाए, इवन क्रिस्टल रे मु कहउतली पानी भितरे पडिले कोन हुए, क्रिस्टल रे भी ताकू एनालाइज करले 6टा पूरा पूरी डीप रूटेड बॉन्डेड, आ गुटे बाहरे एमतिया बुलुछि कोन ताकू केही पचारु नांती, से बाहर टिके 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 एमती करूछि, घोघा करूछि। So this is what I wanted to tell you. So complex compounds are completely different, has unique properties. आमे 12th क्लास रे समस्त तुमे पढिबो डिटेल्स, जदि एबेठु इंटरेस्ट होची तुमे हमरो यूरेनियम रो ई बुक को पढेबो, ई बुक अंडर रे क्लास 11 रो सबुतक टॉपिक रही गलानी, बाहरी गलानी, मोर एक्सटेंसिव लेक्चर नोट्स आउ क्लास 12 रो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रो बाहरी गलानी, आस्ते आस्ते हबो चलीची। आउ सेटा तुमे देखिबो, समय हबनी मु जानिची, खाली जस्ट तुमको कहि देली, सेथि पाखा पाखी 50 की 60 पेज रो सेटा पाठ, सेटा तुमे देखिबो। So with this we today start our fascinating program on any question that you want to ask, जो केतोडा को बैलेंसिंग है नथला मुग्धा करो काली बहुत लेट इवनिंग रे मते मने पकेले, better late than never. I was really apprehending guys including Mugdhakar is quite indifferent to my request of finding out even the minutest error, but my apprehension got totally changed when Mugdhakar found out a mistake, 2-3 mistakes in that. I told you, the sooner you find a mistake, you inform me. Even if it is a repetition, more than one can find a mistake, so that I can make it mistake free. Any question, if you are hearing me, you can ask any question before we start today's proceedings. It will be a hectic one. I will just stop recording and start a new recording. Yes, let me first interact with you. First, Anurag. अनुराग को तमर माइक्रोफोन काम करूनी। वेल तमे पछर देखिबा, तापरे तुम पछर देखिबा, तमे ये करो। हाँ गोपाल, P4O6 और P4O10 रा केमिति काढिबा में वाटर माने सुनो, एक्चुअली जो हमें P2O3 बा P2O5 हमें कहू,
Yes, sir. ସେଇଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି P4O6 ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା P4O10 এইটা ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିକିରି ଦିଟା ଫସ୍ଫରିକ ଏସିଡ ରୁ ପିବା ଫସ୍ଫରସ୍ ଏସିଡ ରୁ এইଟାର ଏସିଡ ହଉଛି H3PO3 এইଟାର ଏସିଡ ହଉଛି H3PO4 ଆମେ କଣ କରୁ ନା এইଟାକୁ 2 ରେ ଗୁଣି ତିନିଟା ୱାଟର ବାହାର କରି ଏହା ବାହାରଲା ବୋଲି କହି ଦଉ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ତାର ଡବଲ ତା स्ट्रक्चर अछि तार साइक्लिक स्ट्रक्चर अछि परवर्ती काल तुम जानिबो तुमे कहबो मु जानिबि केमती एटा कोन एसिड हबो तुमे करूनो तमे जदी जान एते समय परे जानि परिबोनी एटा +3 स्टेट रे अछि तेणु तेरे +3 मार्का एसिड को सिए जीवो एवं +3 मार्का होची H3PO3 जदी न जानि परिबो ताहले ट्रायल एंड एरर करो ए पर्यंत आई एम श्योर गोपाल that you have developed the knack to immediately find out the oxidation number and then forecast, predict what would be the corresponding acid having +3 state. So, এইটা রইলা phosphorus acid, তারপরে আরামরে এটি 4 গুণ দিলে 4 ଅଛି, এটি 4 গুণ দিলে 12 হই গলা, এটি 6 কর দিলে 6 দুনে 12 ହେଲା 6 6 6 12 4 3 12 so everything is in order. है कि नहीं? Yes, sir. Any other question that you want to ask? Feel free. Gopal Puni hath टेकिछ काहे हाथ डाउन करो. Okay. No question then we